नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है घटना सूत्र। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। हम फिजिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स होंगे जिसमें पूरी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एक वीडियो सीरीज में हम कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, पीवाईक्यूज यूपीएससी के भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस के भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना यूपीएससी के साथ काफ़ी लंबा है। मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, उसमें 3 मेंस दिया हुआ है। मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं, 2 फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और 2 फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। इसमें मैं साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाऊँगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाऊँगी। तो आप बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना सूत्र वीडियो लेक्चर सीरीज। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ घटना सूत्र। इस वीडियो में हम जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि हमारी ये क्लास 8th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। आपने ओवरव्यू वगैरह देख लिया था इस चैप्टर का, हम उसी में से कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में से। देखो हम पहले लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल रीजन्स पढ़ा था। अब है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स डिजास्टर्स मेनली ऑकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और irresponsible handling of hazardous material. One of the worst industrial disasters of all the time occurred in Bhopal on 3rd December 1984 around 12:30 am. It was a technological accident in which a highly poisonous methyl isocyanide gas, ये important है, ये पूछ लेता है कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसको MIC बोलते हैं। Gas, along with the hydrogen cyanide and other reaction products, leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. तो कौन सी इंडस्ट्री थी? यूनियन कार्बाइड की इंडस्ट्री थी। और ये वाले जो डिजास्टर है ना, इसके किसी ना किसी पार्ट से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी में 1998 में, 2002 में, यूपीपीसीएस 2001 में, 2004 में, 2007 में, 2009 में, बीआरपीसीएस 2004 में, 2008 में। The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, and gastrointestinal disorders. In another incident on 23rd December 2005, due to gas well blowout in China, 243 people died, 9,000 were injured, 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered burns in their eyes, skin and lungs from the gas. अब ये सब इंसिडेंसेस हमने देखे, लेकिन इसके रिस्क रिडक्शन मेजर्स क्या क्या हैं? Densely populated residential areas should be separated away from the industrial areas. People staying in the vicinity of the industry should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case if an accident occurs. Fire warning and fighting system should be improved. Storage capacity of toxic substances should be limited. And last is pollution dispersion qualities in the industry should be improved. अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की ओर। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. The iron and steel industry and the textile industry are the older industries, while the information technology industry is an emerging one. The countries in which iron and steel industry are located are USA, Russia, China, Germany, Japan. Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, and Taiwan. The major hubs of information technology industry are the Silicon Valley of Central California and Bangalore region of India. अब यहाँ पे do you know में देखिए, emerging industries are also known as sunrise industries. तो क्या बोलते हैं emerging industries को? ये important है, sunrise industries. These include information technology, wellness, hospitality and knowledge. अब iron and steel industry. Like other industries, iron and steel industry too comprises various inputs, processes and outputs.
दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट है, फीडर इंडस्ट्री है जिससे अदर मिनरल्स बनते हैं, वेयर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं। The inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal, and limestone, along with the labor, capital, site, and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. Smelting एक important process है, यहाँ glossary में दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे. It is then refined. The output obtained is steel, which may be used by other industries as raw material. तो स्मेल्टिंग देखो, स्मेल्टिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या हीटिंग बियॉन्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट करना पड़ता है। उसके बाद हम आते, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, तो इसमें हम 8 टन ऑफ कोल मिलाएंगे और 4 टन ऑफ आयरन ओर मिलाएंगे प्लस 1 टन ऑफ लाइमस्टोन मिलाएंगे, तब 1 टन ऑफ स्टील बनेगा। मतलब कितना वेस्टेज भी है इसमें, आप ये समझ सकते हो। Steel is tough and it can easily be shaped, cut or made into wire. Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel and copper. Alloys give steel unusual hardness, toughness or ability to resist rust. Steel is often called the backbone of modern industry. Almost everything we use is either made of steel and iron or has been made with tools and machinery of these metals. Ships, trains, trucks and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles that you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are mined with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. तो इसमें स्टील का बताया कि हर चीज़ स्टील की कितनी सारी यूज़ होती है। हम यहाँ पे डायग्राम देखो कि कैसे लिखा है कि आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए कैसे इसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। नीचे पैराग्राफ में आते हैं। Before 1800, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. Later, the ideal location for the industry was near the coal fields and close to canals and railways. After 1950, iron and steel industry began to be located on the large areas of flat land where sea and near the seaports. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. ये फिगर देखेंगे साथ साथ में तो समझ आ जाएगा। 5.7 In India, iron and steel industry has developed, taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Rourkela, Bokaro are situated in the region that spreads over 4 states, that is West Bengal, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are the important steel producing centers utilizing local resources. ये important है। Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu. अब यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है ना, यहाँ पे इस मैप को एक बार स्टडी करिएगा। इस मैप में मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज लिखे हुए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा किस किस कंट्री में मिलता है। हम सबसे पहले इसमें जमशेदपुर को स्टडी कर लेते हैं। जमशेदपुर, बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, दैट इज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. It was privately owned. After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plants. TISCO was started in 1907 in Sakshi, near the confluence of the river Subarnarekha and Kharkai in Jharkhand. तो कहाँ पे 1907 में बना था टिस्को? सुबर्णरेखा रिवर और खारकाई रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे झारखंड में। लेटर ऑन साक्षी वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, तो इसी एरिया का नाम कर दिया गया था जमशेदपुर। Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel industry in the country. तो क्यों ideally situated है ये हम अभी पढ़ते हैं। This was chosen to set up the steel plant for several reasons. This place was only 32 kilometers from Kalimati station on Bengal-Nagpur railway line. It was close to the iron ore, coal and manganese deposits as well as to Kolkata, which provided a large market. टिस्को gets its coal, टिस्को को कोल कहाँ से मिलता है? Get its coal from Jharia coal fields, iron ore and limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh. The Kharkai and Subarnarekha rivers ensured sufficient water supply. Government initiatives provided adequate capital for its later development. In Jamshedpur, several other industrial plants were set up after TISCO. These produce chemicals, locomotive parts, agricultural equipment, machinery,
tin plate, cable, and wire. The development of iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India. Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel plants. It also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industries. अब आते हैं हम पिट्सबर्ग के बारे में. अभी हमने देखा जमशेदपुर का. अब पिट्सबर्ग, it is an important steel city of the United States of America. The steel industry at Pittsburgh enjoys locational advantages. Some of the raw materials, such as coal, is available locally, while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota, about 1500 kilometers from Pittsburgh. Between these lines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping ore cheaply, the famous Great Lakes Waterway. Trains carry the ore from Great Lakes to Pittsburgh region. The Ohio and the other rivers provide adequate water supply. Today, very few of the large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valleys of rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market both by land and water routes. The Pittsburgh area has many factories other than steel mills. These use steel as the raw material to make many different products, such as railroad equipment, heavy machinery, and rails. The names of Great Lakes, do you know me? देखिएगा, the names of Great Lakes are Superior, Huron, Ontario, Michigan, and Erie. कौन कौन से हैं? Great Lakes के Superior, Huron, Ontario, Michigan, and Erie. Lake Superior is the largest of these 5 lakes. It lies higher upstream than other. Lake Superior, ठीक है? Largest of these 5 lakes, ठीक है? Cotton textile industry, अभी हमने पढ़ा आयरन ओर के बारे में, अब हम देखेंगे cotton textile industry के बारे में. Weaving cloth from yarn is an ancient art. Cotton wool, silk, jute, flax have been used for making cloth. The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them. Fibers are the raw material of textile industry. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen, and jute. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic, and rayon. अब यहाँ पे देखो ये टेक्सटाइल टर्म कैसे डिराइव हुआ, वर्ड ओरिजिन में लिखा हुआ है. द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सेरे विच मीन्स टू वीव. टेक्सेरे. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं हम. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. Till the Industrial Revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques, wheels, and looms. In the 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industry, first in Britain and later in other parts of the world. Today, India, China, Japan, and the USA are important producers of cotton textile. India has a glorious tradition of producing excellent quality cotton textiles. Before the British rule, Indian handspun and hand-woven cloth market already had a wide market. The muslins of Dhaka, ये important है, ये बहुत बार पूछ चुका है, मतलब history point of view से भी. The muslins of Dhaka, chins of Masulipatam, calicos of Calicut, and gold wrought cotton of Burhanpur, Surat, and Vadodara were known worldwide for their quality and design. But the production of hand-woven cotton textile was expensive and time-consuming. Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produce cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units. अभी जो मैप है ना, यहाँ पे वर्ल्ड के मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स लिखे हुए हैं, ये एक बार आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं हम. The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. The warm, moist climate, a port for importing machinery, availability of raw material, and skilled labor resulted in rapid expansion of industry in the region. Ab do you know me? The first textile mill in the country was established at Fort Gloucester near Kolkata in 1818, but it was closed after some time. Initially, this industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat because of the favorable humid climate. But today, humidity can be created artificially. Humidity can be created artificially. एक second.
एंड रॉ मटेरियल इज अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग। प्योर मतलब जितना आप रॉ मटेरियल लगा रहे हो उतना ही कॉटन मिलेगा, ठीक है। वेट लूजिंग में क्या होता है, जितना आप रॉ मटेरियल लगाते हो उससे कम आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, और वेट गेनिंग में आप कम रॉ मटेरियल लगाते हो, ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। डू यू नो में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जितना भी प्रोडक्शन है ना, उसका जो 1/3 है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। अब अहमदाबाद का क्या है, अहमदाबाद इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती। द फर्स्ट मील was established in 1859. It soon became the second largest textile city in India after Mumbai. Ahmedabad was therefore known as Manchester of India. क्या बोलते थे इसको, Manchester of India. Favorable locations were responsible for development of textile industry in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to cotton growing area. This ensures easy availability of raw material. The climate is ideal for spinning and weaving. The flat terrain and easy availability of land is suitable for the establishment of the mills. The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor. Well-developed road and railway network permits the easy transportation of textile to different parts of the country, thus providing easy access to the market. Mumbai port nearby facilities import of machinery and export of cotton textiles. But in the recent year, Ahmedabad textile mills have been having some problems. Several textile mills have closed down. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country, as well as the upgradation of machines and non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad. Now we will study about Osaka. It is an important textile center of Japan, also known as Manchester of Japan. तो इसको Manchester of India is Ahmedabad and Manchester of Japan is Osaka. The textile industry developed in Osaka due to several geographical factors. The extensive plain around Osaka ensured that land was easily available for the growth of cotton mills. Warm, humid climate is well suited to spinning and weaving. The river Uodo provides sufficient water for the mills. Labor is easily available. Location of port facilitates import of raw cotton and exporting textiles. The textile industry at Osaka depends completely upon imported raw materials. तो क्या है वहाँ पे जो raw material वहाँ locally नहीं होता, वो imported raw material पे depend करती है वहाँ की industry. Cotton is imported from Egypt, India, China and USA. The finished product is mostly exported and has a good market due to good quality and low price. Though it is one of the important textile cities of the country, of late the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel industry, machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment and cement. Now we will study about information technology. Imagine how much could be accomplished if companies could operate on a 24-hour workday. Some software companies in the United States of America and Bangalore, India, have joined hands to achieve this. There are many ways in which this form of shift works across oceans. For example, two software professionals, Danny in Silicon Valley, California, and Smita in Bangalore, are working on a joint project. While Smita in Bangalore sleeps, Danny in California is working. At the end of his workday, he sends a message to Smita updating his progress. When she arrives at work in Bangalore, a couple of hours later, she notices that a message awaits her. She gets to work on the project straight away. By the end of her workday, she relays the results of her efforts back to California. By this way, they communicate and work together. It is as if they were sitting in adjoining offices. ये आपको सिनेरियो समझ आया होगा कि रात को इंडिया में जब इंडिया में रात है तब यूएसए में काम हो रहा है, और यूएसए में जब रात है तब इंडिया में दिन है और इंडिया में काम हो रहा है. The information technology industry deals in the storage, processing and distribution of information. तो information technology industry किस में डील करती है? स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज के? इंफॉर्मेशन में. Today this industry has become global. This is due to a series of technological, political and socio-economic events. The main factors guiding the location of these industries are resource availability, cost and infrastructure.
The major hubs of the IT industry are the Silicon Valley, California, and Bangalore in India. Bangalore is located on the Deccan Plateau, from where it gets the name Silicon Plateau. Oh, ये आपको नई चीज पता चली यहाँ पे, ठीक है। किसको सिलिकॉन प्लेट्यू क्यों बोलते हैं, अपन ने सुना तो था सिलिकॉन प्लेट्यू बोलते हैं, बट क्यों बोलते हैं, वो डेक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड है, बट वो सिलिकॉन वैली के जैसे काम करता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सिलिकॉन प्लेट्यू। The city is known for its mild climate throughout the year. Silicon Valley is an important part of Santa Clara Valley, located next to the Rocky Mountains of North America. The area has temperate climate, with the temperatures rarely dropping below 0 degrees centigrade. The locational advantages of the Silicon Plateau, Bangalore, and Silicon Valley, California are discussed on the next page. You may have noticed the similarities between the two cities. There are other emerging information technology hubs in metropolitan centers of India, such as Mumbai, New Delhi, Hyderabad, Chennai. Other cities such as Gurgaon, Pune, Thiruvananthapuram, Kochi, and Chandigarh are also important centers of IT industry. However, Bangalore has always had a unique advantage as a city with highest availability of middle and top management talent. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखिए, बीइंग बैंगलोर, ये एक टर्म यूज किया जाता है, means to lose one's job to someone in the city of Bangalore. मतलब means to lose one's job to someone in the city of Bangalore. Bangalore वाला कोई जॉब ले लिया. A few years ago, many IT jobs in USA were outsourced to countries like India, where equally skilled labor was available at lower salaries. इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ, इंडस्ट्रीज वाला पार्ट. अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर बुक, दैट इज चैप्टर 6, एंड दिस इज ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर का हम सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. हम सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, उसके बाद हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या कैसा है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की ओर, उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है देखेंगे, जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज क्या होता है. पॉपुलेशन चेंज के बाद हम मूव ऑन करेंगे कि पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड हमको क्या देखने को मिलता है, और पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है, किस बेसिस पे पॉपुलेशन की कंपोजिशन को देखा जाता है. और यहाँ पे कुछ PYQs आए हुए हैं एज सेक्स पिरामिड के ऊपर, वो हम देखेंगे. और इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा. इसके बारे में ना काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आगे के चैप्टर्स में आता है, उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे. हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं. People are a nation's greatest source. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated, and motivated people develop resources as per their requirements. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. They differ in their educational levels, age, and sex. Their numbers and characteristics also keep changing. अब यहाँ पे डू यू नो में देखिए क्या लिखा है. The Government of India has a Ministry of Human Resource Development. The ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skills. This just shows how important people are as a resource for the country. तो इससे पता चलता है कि people कितने important resource है country के लिए. अब डू यू नो में आते हैं. नीचे एक और चीज लिखी हुई है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना was started in 2015 with the aim of training. कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना was started in 2015 with the aim of training 1 crore Indian youth from 2016 to 2020. The objective of the scheme is to encourage aptitude towards employable skills by giving quality training to probable and existing wage earners. ठीक है. अब इस पे हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है. The way in which people are spread across the surface of the earth is known as pattern of population distribution. मतलब तरीका, किस तरीके से लोग किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, is called as distribution of population. More than 90% of the world's population live in just 30% of the land surface. ये कितना uneven distribution है ये बता रहा है. The distribution of population in the world is extremely uneven. Some areas are very crowded and some areas are sparsely populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe, and Northeastern and North America. Very few people live in the high latitude areas, tropical deserts, high mountains, and areas of equatorial forests. Many more people live north of equator than south of equator. तो north में ज़्यादा लोग रहते हैं.
Almost 3/4 of the world's people live in two continents, that is Asia and Africa. 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. अब यहाँ पे ग्राफ देखो, इसमें लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा कहाँ पॉपुलेशन है, चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन और जापान. ठीक है, अब हम आते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में. ये सब एकदम सिंपल चीज़ें, इसलिए अपन ज़्यादा उसको बार बार ऐसे हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं पढ़ रहे, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. डू यू नो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो कितना, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. भाई डेंसिटी टर्म तो है, लेकिन अभी तक तो हमको इसका मीनिंग नहीं पता, तो चलो अब हम वो देखते हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखो, यूपीपीसीएस 2007 में पूछा जा चुका है. पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस. किसी भी यूनिट एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. तो जैसे हमने देखा कि 382 है इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग रहते हैं एवरेज में. The average density of population in the whole world is 51 person per square kilometer. South Central Asia has the highest density of population, followed by East and Southeast Asia. अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो इसमें है जोग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब पॉपुलेशन जो है, वो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहले है जोग्राफिकल फैक्टर्स. तो उसमें आते हैं हम टोपोग्राफी. People always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. The Ganga Plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. अब आता है climate. People usually avoid extremes of climates that are very hot or very cold, like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica. Next आते हैं soil. Fertile soils provide suitable land for agriculture. Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Huanghe, Changjiang in China, and Nile in Egypt are densely populated. For water, people prefer to live in the areas where fresh water is easily available. The river valleys of the world are densely populated, while deserts have sparse population. Minerals. Areas with mineral deposits are more populated. Diamond mines of South Africa and discovery of oil in the Middle East led to settling of people in these areas. ठीक है, समझ आया. तो क्या क्या फैक्टर्स थे? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स. फिर सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो उसमें आता है फर्स्ट सोशल. Areas of better housing, education and health facilities are more densely populated, that is Pune. कौन सा एरिया आ जाते हैं हम, पुणे. ठीक है. नेक्स्ट है कल्चरल. प्लेसेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल. वाराणसी, जेरूसलम एंड वैटिकन सिटी आर सम गुड एग्जाम्पल्स. इकोनॉमिक. इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. Large number of people are attracted to these areas. Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated areas. अब ग्लॉसरी देखो, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग क्या लिखा है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एवरेज इंसान कितने साल तक कितने साल तक जी सकता है. अब आ जाते हैं पॉपुलेशन चेंज क्या है. द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में नंबर ऑफ पीपल चेंजिंग, इस मतलब चेंज इन नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज. The world population has not been stable. It has increased manyfold as seen in the figure 6.3. This is actually due to the changes in the number of births and deaths. For an extremely long period of human history, until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. Large numbers of babies were born, but they died early too. This was as there was no proper health facilities. Sufficient food was not available for all the people. Farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people. As a result, the total increase in population was very low. In 1804, the world's population reached more than 1 billion. 150 years later, in 1959, the world's population reached 3 billion. This is often called population explosion. In 1999, 40 years later, the population doubled to 6 billion. The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high.
Births are usually measured using the birth rate. That is the number of live births per 1,000 people. यदि 1,000 लोग पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने लोग live पैदा हो रहे हैं. Deaths are usually measured using the death rate. That is number of deaths per 1,000 people. Migrations is the movement of people in and out of the area. Birth and deaths are the natural causes of population change. पैदा होना और मरना या natural causes. The difference between the birth rate and the death rate of the country is called the natural growth rate. The population increasing in the world is mainly due to rapid increase in natural growth rate. जो country में population change होती है majorly it is due to natural growth rate. किसी वर्ल्ड में फिर देखो आते हैं हम नीचे. माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन चेंजेस. तो एक और तरीका क्या है पॉपुलेशन चेंज होने का, दैट इज माइग्रेशन. पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज. इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री. फिर इमिग्रेंट्स जो आई आता है जिसमें आर पीपल हु अराइव इन अ कंट्री. ये इंपॉर्टेंट है. ई जब होगा इमिग्रेंट्स तो उसमें होगा जो पीपल एक कंट्री को छोड़ के जाते हैं. फिर आई वाला जब होगा वो जो पीपल एक कंट्री में आते हैं. तो ग्लॉसरी में देखो आई इमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री. वैसे ई वाला रहेगा तो व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री. Countries like USA and Australia have gained in numbers in migration. Sudan is an example of a country that has experienced a loss in population numbers due to out-migration. The general trend of international migrations is from the less developed nations to the more developed nations in search of better employment opportunities within countries. Large number of people may move from rural to urban areas in search of employment, education, and health facilities. Next है patterns of population change. Rates of population growth vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all the countries are experiencing this growth. Some countries like Canada have high population growth. Some countries like Kenya, I'm very sorry, have high population growth rates. They have both high birth rates and death rates. Now, with improving healthcare, they have both high birth rates and high death rates. Now, with improving healthcare, death rates have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rates. In other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of low death and low birth rates. अभी मैप दिया हुआ है, मैप आप लोग एक बार देख लीजिएगा. अपन यहाँ पे आते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की ओर. How crowded a country is has little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation, and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population change refers to the structure of the population. The composition of population helps us to know how many people are males or females, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupation they are employed in, what are their income levels and health conditions. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, that is age sex pyramid. तो क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे एज सेक्स पिरामिड. यहाँ पे डायग्राम देखिएगा नीचे, ये मेल वाला ब्लू चीज से रिप्रेजेंट किया गया, ब्लू कलर से, फीमेल वाला रेड कलर से. A population pyramid shows the total population divided into various age groups, that is 5 to 9 years, 10 to 14 years. The percentage of total population subdivided into males and females in those age groups. तो यहाँ पे x axis में रिप्रेजेंट किया है परसेंटेज और y axis में रिप्रेजेंट किया गया है एज ग्रुप. ये देखिए क्लियर हो जाएगा काफी चीज. The shape of population pyramid tells the story of the people living in that particular country. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of births. The size of top shows the number of aged people above 65 and reflects the number of deaths. The population pyramid also tells us how many dependents are there in a country. There are two groups of dependents. कौन-कौन से? Young dependents aged below 15 years and elderly dependents above 65 years. Those of the working age are economically active. तो बीच वाले एज ग्रुप वाले इकोनॉमिकली एक्टिव हैं और above 65 और less than 15 are
Dependence. The population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adults, and there are very few old people. The situation is typified by the pyramid shown for Kenya. अब यहाँ पे देखिए अलग अलग शेप्स बताए गए और ये यूके पीसीएस 2004 में और बिहार पीसीएस 2002 में पूछा जा चुका है. In countries where death rates, especially amongst the very young, are decreasing, pyramid is broad at the younger age group because more infants survive to adulthood. This can be seen in the pyramid for India. Such population contain a relatively large number of young people, and which means a strong and expanding labor force. In countries like Japan, low birth rate makes the pyramid narrow at the base. Decreased death rates allow number of people to reach old age. Skilled, spirited, and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skills and opportunities to become able and productive. तो इस तरीके से हमने ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ. इसमें PYQs भी हमने डील किया है और आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा. इस तरीके से हमारी ये वाली बुक क्लास 8th की NCERT भी यहाँ पे एंड होती है. इसको काफ़ी अच्छे से रिवाइज करिएगा. अब हम मिलते हैं क्लास 9th की NCERT के साथ. थैंक यू सभी को.